हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यू पर में आपका वेलकम है। इस चैनल के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने जाना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नाउ वी विल नो हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन humans. Basically, there are two systems of coordination of activities in humans. These are nervous system and endocrine system or hormonal system. This is also known as the hormonal system. In human beings, nervous system and endocrine system work together to control and coordinate all our activities such as our physical action, our thinking processes and our emotional behavior. These all activities or things are controlled by nervous system and endocrine system. Both the system of coordination, nervous system and endocrine system consist of a number of organs working together in a systematic manner. Now, human nervous system. First, we will discuss about the nervous system. The function of nervous system is to coordinate the activities of our body. It is the control system for all our actions, thinking and behavior. All our action, physical action, thinking and behavior. The nervous system helps all other system of our body to work together. The nervous system helps all other system of our body to work together. Its job is to control and coordinate the parts of our body so that they work together. ये सारे पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है, जिससे कि हमारा सारा ऑर्गन बॉडी का प्रॉपरली वर्क कर सके और एक साथ मिलकर के ये काम कर सके। सही समय पर सब काम हो पाए, यही इसका मेन जॉब है। आवर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट मसल्स सो दैट वी कैन डू थिंग्स विच नीड थिंकिंग लाइक रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग और डांसिंग। कुछ भी जो हम सोचते हैं करने के लिए, तो हमारा जो है नर्वस सिस्टम मसल को कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो जो है सो काम, वो एक्टिविटीज, वो चीज हम कर सके। नर्वस सिस्टम ऑल्सो कोऑर्डिनेट थिंग्स विच डोंट हैव टू थिंक। इसके अलावे जो हम नहीं सोचते हैं वो भी हमारा नर्वस सिस्टम करता है, जो कि हमारे दिमाग में नहीं आता, हमारे सोच में नहीं रहता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन। ये सारा फंक्शन जो है ये हम सोच के नहीं करते हैं, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम इसको करने में पूरा जो है सो हेल्प करता है और कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम को डिटेल में जानने के लिए हम लोग जो है सो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम ऑल्सो पासेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमारे बॉडी में जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल बॉडी में, तो एक दूसरे को मैसेज भी जो है सो हमारा नर्वस सिस्टम पास करता है। जैसे ही हम खाने की कुछ भी चीज अपने माउथ में रखते हैं, तो हमारा सलेवा जो है सो वो
सैलिवरी ग्लैंड जो है सो सलेवा रिलीज करता है ताकि हमारा डाइजेशन जो है सो स्टार्ट हो सके। इस तरह जो है सो हर पार्ट ऑफ बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसका कंट्रोल जो है सो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अब नर्वस सिस्टम का यूनिट है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या सिंगल जो है सो सेल नर्वस सिस्टम का कहलाता है न्यूरॉन, नर्व सेल्स दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो फर्स्ट हम लोग जो है सो न्यूरॉन के बारे में जो है सो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जान लेंगे, फिर आगे की जो है सो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। This is the diagram of neuron. The unit of nervous system is called neuron. The unit which make up the nervous system are called nerve cells or neurons. Neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Neuron is the largest cell in the body, looks like an electric wire. Their structure specially adapted to be able to carry masses over large distances in the body quickly. The neuron carry messages in the form of electric signal called nerve impulse. This is the cell body of neuron. This is called nucleus and these are the part of cytoplasm, and this is thread-like structure are called dendrites. The longest dendrites is called axon. Axon is protected by a sheath called myelin sheath made up of fat and protein. So a neuron has three components, that is cell body, dendrites and axon. The cell body of a neuron is like a typical animal cell which contains cytoplasm and a nucleus. A number of long and thin fibers are stretching out from the cell body of a neuron. They are called nerve fiber. The shorter fiber on the body of neurons are called dendrites, and the longest fiber on the cell body of a neuron is called axon. The axon has an insulating and protective sheath of myelin around it. Myelin is made up of fat and protein. Now the message, how message is passed? The messages which the neuron transmit in the nervous system are in the form of electric signal called nerve impulse or impulse. The dendrites pick up the nerve impulse or messages from other neuron lying nearby. जो इसके सराउंड में होता है उससे ये मैसेज ले लेता है. They pass the impulse to the cell body and then along the axon. The axon passes the impulse to another neuron through a junction called synapse. Synapse is actually meeting point of two neurons. Neurons are of three types: sensory neurons, motor neurons and relay neurons. Now we will study about the motor neurons, sensory neurons and relay neurons. Neurons are of three types. Neurons are of three types: sensory neuron, motor neuron and relay neuron or adjacent neuron. Sensory neuron. Sensory neurons transmit impulses from the sensory cells or receptors towards the central nervous system, that is spinal cord and brain. CNS, spinal cord and brain. Motor neurons. Motor neurons transmit impulses from the central nervous system, spinal cord or brain, towards the muscle cell, which is called effectors. Relay neurons. Relay neurons occur in the central nervous system where they serve as link between other neurons. ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे adjacent neuron भी कहते हैं. Now synapse. A very small gap between the two neurons where they join. This gap is called synapse.
The nerve impulse is carried over the small gap between a pair of neurons by means of a chemical called neurotransmitter. This chemical is called neurotransmitter. Neurotransmitters are the chemicals that transmit the nerve impulses across the synapse. They are stored in synaptic vesicle of axon terminal and are released into the synaptic cleft. ये केमिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर ये स्टोर होता है सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ एक्सॉन में और कैरिड एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन का एंड जो होता है टर्मिनल वहां पर ये स्टोर रहता है एंड आर रिलीज और रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. द केमिकल कॉजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स इज कॉल्ड एसिटाइल कोलाइन. ये केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलाइन. So, a macroscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulse pass when going from one neuron to the next is called a synapse. So, synapse is also known as the connecting point link between two neurons, या meeting point of two neurons, and then they work as the adjacent neuron over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next. Synapse connects neuron so synapse actually act like one-way valve. Synapse connect neurons and actually act like one-way valve. This is because the transmitter substance or the chemical present on only one side of the gap. ये synapse के एक ही साइड में ये present रहता है. Due to this, the nerve impulses or masses through a particular set of neurons can go across only from one side. ये एक ही तरफ से जो है सेल बॉडी से लेकर के एक्सॉन के डेंड्राइट जो है सो एक्सॉन जो है उसके टर्मिनल जो है सो एंड तक जाता है. तो वन वे जो है सो ये ट्रांसमीटर है. सो दिस इज बिकॉज द ट्रांसमीटर सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द गैप. ड्यू टू दिस द नर्व इम्पल्सेज और मैसेज थ्रू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन्स कैन गो across only from one side. Can go across only from one side. Synapse ensure that nerve impulses travels in only one direction. The spinal cord is very thick nerve which runs inside the cavity of backbone in our body. हमारा जो वर्टिब्री है उस वर्टिब्री जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से जुड़ करके हमारा बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम बनाता है. इस वर्टिब्री के बीच के गैप के थ्रू से जो है सो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है. द अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच टू द ब्रेन. हमारे पीछे वाले ब्रेन से जो है सो अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है सो अटैच रहता है. The nerves are a kind of wires which are distributed all over our body. हमारे पूरे शरीर में नर्व जो है पूरा वायर के तरफ जो है सो पूरा फैला रहता है. The brain and spinal cord are connected to all the sense organs and other parts of our body by million of नर्व्स. इतने सारे नर्व्स जो है सो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंस ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं. जितने सारे सेंस ऑर्गन उससे कनेक्ट करते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. द क्रैनियल नर्व्स कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. क्रैनियल नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से जो है सो जोड़ता है. एंड द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग पार्ट. ब्रेन के अलावा जो पार्ट है
remaining part of the body like muscle, skin, etc. to the spinal cord. ये जो है सो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अदर पार्ट को जोड़ता है. Sensory nerves and motor nerves.